Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about monthly prediction month of June 2021 for Capricorn Ascendant. Capricorn Ascendant, Saturn is your Ascendant Lord, is retrograde in your first house, and Jupiter is going to retrograde in your second house from 20th June 2021, and Mercury is also going to retrograde in the month of June till 22nd of June 2021 in Gemini and Taurus sign. So guys, first of all, I'm going to talk about your health. You need to be careful about your health. Some unnecessary burden, some business profession tension will create a lot of headache. Unnecessary burden create a lot of problem. Your mind is not in a comfort zone. You are feeling very low energy. You are very upset because your all work are delay or pending because Saturn is retrograde in your first house, which is very weak position of Saturn. Because in Kalpurus chart, Saturn is not comfortable in first house, and second thing, retrograde planet, a natural malefic planet retrograde in your first house, being your ascendant lord, is retrograde in your first house, which is not very productive for you. So you may be in a deep depression. You may be thinking a lot in the month of June 2021, why all this delay, why things are not going as per my expectation. That's why you are thinking very deep, and you will be a part of any kind of depression. So you need to be careful. Stop thinking too much. Stop thinking about your pending work, because time is not right now. Time teaches you many lessons in life, and this is a bit struggling period, Capricorn, for you. And now I'm going to talk about your business and profession. In the terms of business and profession, you need to perform your best. You are not satisfied, you are not happy in the month of June 2021. You are trying to perform your best and put your energy, but you are failed to get results because results are not very promising. Your seniors are not satisfied from your performance. You are trying to perform best, but you have failed to get results. You have failed to fulfill your targets. If you are willing to switch off your job, you are failed to get good job. If you are unemployed and you are finding a job, then this month create a lot of problems because you are not getting a job as per your expectations. Capricorn, you need to be patient. You must read Goddess Kali Chalisa before sleep 3 times, 5 times, 7 times, 11 times. The more you read Goddess Kali Chalisa, the more you feel positive energy, and your good fortune start in your favor. But as per dynamic position, this whole month create a lot of panic situation. Money matters will be not as per your expectations. You are feeling very tight pocket. You can say your savings are very downside, and your expenditures will be on top. Relationship between you and your seniors are not very promising in the month of June 2021. Some professional burden will create some panic situation. You are trying to perform your best, but you have failed to get results. If you are a businessman, importer, exporter, manufacturer, shopkeeper, you are not perform well as per your expectations. You are not getting a good results as per your investments, because Saturn is retrograde in your first house. Mercury is also retrograde in the month of June in Gemini and Taurus till 22nd of June, and Jupiter is also retrograde in your birth in your dynamics. So if you have all these 3 planets direct in your birth chart, then you will face a lot of struggle, hurdles, delay, obstacles, legal matters will arise in the June 2021. But if you have all these 3 planets retrograde in your birth chart, then you will feel much relaxed and better, and you will enjoy a lot of comfort. So you must consult with your nearest astrologer which type of planets you have in your birth chart. Then you will get a full report of the month of June 2021, which type of results you will get. If you have a direct planets in your birth chart like Mercury, Saturn and Jupiter is direct in your birth chart, you are not able to success and achieve your goals. And you don't share your secrets with your friends or with your any relatives, because they maybe cheat you. You may be a part of any defame. You may be a part of any type of arguments or litigation at your workplace as well as your home. Capricorn, you need to perform your best. Patience is a first key in the month of June 2021. If you want to success in life, then you be in patience. Live your life with a positive attitude. I believe in one line which I am going to share with you. Negative thinkers see difficulties in every opportunities, and positive thinkers see opportunities in every difficulties. So be positive thinker, not negative. Remove negativity from your mind, because this is a small time frame as per dynamics position, which is create some panic situation. You are best the way you are, but your fortune is not in your favor. You are only hard work performing right now. Whatever you earn, that is you earn from your hard work. Your good fortune is not working right now.
So Capricorn, be patient, be relaxed, just be humble. Don't use any bad word at your workplace with your seniors, with your colleagues, and if you're a businessman, don't use any wrong word with your business associates or business partner. Otherwise, you will be a part of any litigation or problem. Some court matter will arise. If you have a Capricorn ascendant, if you have a Capricorn moon sign, in both situations you are under the Sadesati. So you need to be careful, and Saturn is retrograde in during Sadesati period. It will create a lot of panic situation. You are feeling very low energy, no money in your pocket. You are trying to perform your best to get results, but you are failed to get results. Your old investments are not going to give fruitful results. In this video, I'm not going to I'm not sharing the negative energy, but whatever dynamics says, I predict you as per your dynamics position. So now I'm going to talk about your family life, your friends and family. Don't share your secrets with your friends or family, first of all. Second, be careful while talking with your husband. Be careful while talking with a spouse or loved one, because this whole time create a lot of panic situation. Your relationship is not very promising with your spouse or with your loved one. There is a strong chances of breakup in your relationship from 23rd of May 2021 to 11th of October 2021, because Saturn is retrograde and aspecting is on your 7th house. Your daily income not very promising. Your competitors are try to disturb you. Your competitors are able to stand in front of you, and they will create a lot of panic situation at your workplace as well as your home. People are jealousing from you, and you are not able to perform your best in your personal life as well as professional life. You need to maintain a good balance between your personal life and your professional life. कैप्रिकॉर्न असेंडेंस जून 2021 का जो प्रेडिक्शन है, ये आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है. देखें, सबसे पहले तो शनि का लगन में वक्री होना, बृहस्पति का आपके दूसरे घर में यानी कि कारक भाव में एक्वेरियस साइन में रेट्रोग्रेड होना, आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी का टॉरस और जेमिनी में रेट्रोग्रेड होना 22 ऑफ जून तक. ये सारी पोजीशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं. अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, ज़्यादा थिंकिंग ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे जिस वजह से आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहेगा, एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट. आप अपनी कोशिश करेंगे कि मैं अपने माइंड को स्टेबल रखूं, बट ड्यू टू सम रीजंस आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे. सो कैप्रिकॉर्न, बहुत अलर्ट होकर चलें, केयरफुल होकर चलें. ये सारा समय आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है. अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रख के चलें. नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक बिल्कुल ना लें, और उसके साथ साथ आप ध्यान रखें ऑयली फूड और जंक फूड ना खाएं. इस सारे समय में हेडेक होगा, विदाउट एनी रीज़न हेडेक होगा. वर्क प्रेशर होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है. आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे काम क्यों नहीं सही तरीके से हो रहे, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हो. सो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई साइड आपकी वीक हो सकती है, नज़र की ऐनक लग सकती है. अगर ऑलरेडी आपका स्पेक्स लगा हुआ है या आपके चश्मा लगा हुआ है नज़र का, तो उसका नंबर बढ़ सकता है. यू नीड टू बी केयरफुल. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर बिजनेस एंड फाइनेंस. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इस महीने बड़ी कोशिश करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी. अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके सीनियर सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपके टारगेट्स नहीं अचीव होंगे, आपको बड़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. ये सारा समय आपके लिए हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ लेकर आ रहा है. ये सारा समय आपके लिए बहुत सारी उलझनें लेकर आ रहा है. ये सारा समय आपके लिए आपके कामों को डिले लेकर आ रहा है. आप बिजनेसमैन हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी किस्म के भी कोई बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम करते हैं, तो ये सारा समय आपके लिए प्रॉमिसिंग नहीं रहेगा. जून 2021 आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे. आपकी पॉकेट जो है वो विदाउट मनी रहेगी, यानी कि पैसे की किल्लत आपको महसूस होगी, जिस वजह से आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, और लोन भी इजीली क्लिक नहीं होगा. कैप्रिकॉर्न, ये सारा महीना आपके लिए लॉट ऑफ स्ट्रगल, चैलेंज लेकर आ रहा है. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स. यू नीड टू बी केयरफुल. अपनी ज़ुबान पे लगाम रखें, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़े ना. इस समय में काली माता की उपासना करें, काली माता के टेंपल जाएं. सैटरडे नाइट को एक कोकोनट लेकर और मोती चूर के लड्डू, मोटी बूंदी के मोती चूर के लड्डू 1 किलो और एक नारियल का भोग काली माता को लगाएं. सैटरडे नाइट लगातार लगाते चलें. हर शनिवार काली माता के मंदिर जाएं, वहाँ बैठकर काली चालीसा पढ़ें. ये सारी रेमेडीज़ आपको पॉजिटिव करेंगी. आपके जो स्ट्रगल हैं वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे. लेकिन एज पर डायनामिक्स पोजीशन, योर असेंडेंस लॉर्ड, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन फर्स्ट हाउस टिल 11th of October. सो टाइम इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग.
अपने पति के साथ इज्जत दें, अपने पति को, अपने शोहर को जितनी इज्जत देंगे उतना गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा। अदरवाइज जिनकी चंद्र राशि है मकर या जिनका लगन मकर है, उनके लिए डाइवोर्स, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व होना, ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है। और चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे करनी चाहिए। इस सारे समय में आपको हर्डल्स का, आपको सारे समय में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और उस तरह से रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड हो। सो सबसे पहले तो कैप्रिकॉन, आप अपना ध्यान रख के चलें, ज़्यादा सोचें ना, डीप थिंकिंग ना करें, अपने स्पाउस को इज्जत दें, घर का बैलेंस, घर का माहौल जो है वो ख़राब ना होने दें, बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ बना के चलें। थोड़ा समय स्ट्रगलिंग ज़रूर है, लेकिन इस स्ट्रगल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। काली माता की उपासना करना ना भूलें। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।